लोग 30 मार्च द हिंदू का न्यूज एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें टोटल 9 आर्टिकल्स है। पहला जो आर्टिकल्स है, गावस्कर कॉल फॉर रिफॉर्म इन अ क्रिकेट रूल। सेकंड आर्टिकल है, कीपिंग सिविल सर्विस बोर्ड इन एबियंस इन इनवैलिड सेज CAT। थर्ड आर्टिकल है, केरला हैज़ नो राइट टू इंटरनेशनल फिशिंग डील। फिर फोर्थ आर्टिकल्स है, इंडियन हिस्ट्रीज एंड डिस्टॉर्टेड नरेशन। फिफ्थ आर्टिकल्स है, लेस देन 6% ऑफ द हाउस होल्ड अंडर द PMY ग्रामीण completed this year। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण completed this year। फिर सिक्स्थ आर्टिकल है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। सेवंथ आर्टिकल है, सेव योर लीवर फ्रॉम वायरल हेपेटाइटिस। 8 आर्टिकल्स है, मजल्ड मीडिया। फिर उसके बाद 9th आर्टिकल्स है, विल ब्रिंग एजुकेशन इनटू द स्टेट लिस्ट। अलागिरी बोला है, ठीक है। लास्ट में हम लोग प्रीलिम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आर्टिकल्स है, गावस्कर कॉल फॉर रिफॉर्म्स इन अ क्रिकेट रूल। इससे मतलब कि एक मेंस में 2013 में क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम्स इन cricket, discuss its various components, explain how silicone tape on the edge of the bat make fool the systems। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में GS पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है। अंडर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी, formal associations and their roles in the politics, government policies and intervention for development in various sections and issues arising out of this design and implementations, important aspects of the governance, transparency and accountabilities, and institutional and other measures। फिर उसके बाद तुम्हारा GS पेपर 4 में क्वेश्चन पूछ सकता है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में, कि एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटस एंड problems, ethics concerns to and dilemmas in the government and private institutions, law, rule, regulations and conscience, accountabilities, etc। The Board of Controls of the Cricket of India, BCCI, national governing bodies for क्रिकेट इन इंडिया, वही नेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट इन इंडिया। ये ऑटोनोमस एजेंसी है, स्टैट्यूटरी सब नहीं है, ये ऑटोनोमस एजेंसी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1860, बट रजिस्टर्ड है सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1860। completely responsible for the cricket governance in India, directly affiliated to the International Cricket Council (ICC), receive some indirect subsidy from the governments, have had eminent politicians and retired bureaucrats elected as the officer, ठीक है। फिर उसके बाद इशूज एंड इट्स फंक्शन क्या है, करप्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैच फिक्सिंग एंड बेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। फिर अल्टीमेटेड डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन द बोर्ड एंड क्रिकेट एसोसिएशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। फिर उसके बाद रेवेन्यू मैनेजमेंट irregularities, journal bickerings among association, unequal representations of state association।
स्टेट एसोसिएशन का अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ स्टेट का बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट का है ही नहीं। फिर उसके बाद लोधा कमेटी क्या बोला कि एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया on account of the report submitted by the Justice Mukul Mudgal committees on 2013 IPL betting scandal। ये बोल रहा है कि रिकमेंडेशंस दिया कि a complete overhauls of the Indian cricket from the very top down to the grassroots level and affecting every stakeholder, cover every aspect of the game with a specific focus on the BCCI administrative structure, governing structure and issues transparency, aim at transforming the entire power structure of the BCCI। ठीक है, तो मिस्टर सुनील गावस्कर व्यू क्या है कि क्रिकेट शुड become a level playing field rather than being tilted heavily in favor of the batsman। Power play restriction, bounce limit, flat pitch, the bigger bat, muscles strengthening of the batsman's smaller boundaries etc. have tilted the game significantly in the favor of the batsman than a bowler, and distance to the boundaries should be increased given the kinds of the bats the current player use। Bouncer rule, giving an extra runs and an extra ball if the ball goes above the batsman's head should be taken away। Once fielders dislodged the stumps with a direct hit in his attempts to run a batsman out, the bowler should be declared dead, and the ball should be declared dead, and no run should be given even if the batsman is not out। ठीक है, the leg by should be done away। Any run should be scored off the bats, and the bowler and her team should not eat penalized। Fielder teams should be penalized not in terms of fines but by the way of giving penalties runs which will affect the results of the match। तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बोर्ड कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिकेट गवर्नेंस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ एफिलिएटेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा तो आंसर हो जाएगा 3, 2 and 3। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग सिविल सर्विस बोर्ड इन एवियंस इज इनवैलिड सेस CAT। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि एलिजिड आर्बिट्री ट्रांसफर्स ऑफ IAS ऑफिसर्स by the Karnataka government officer approach CAT। CAT क्या है? सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, डायरेक्टेड CSB to hear the officers and place its recommendation to the state government। सिविल सर्विस बोर्ड क्या बोल रहा है कि सेटअप डिसाइड पोस्टिंग एंड ट्रांसफर ऑफ द ऑफिसर्स बिलोंगिंग to the Indian Administrative Service
TSR Subramaniam and others versus Union of India केस 2013 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर्स and the state government to set up the independent civil service board within the next few months to deal with the transfer and the promotion of the inquiries or disciplinary action against the bureaucrats. Present status क्या है कि many states are yet to be set up CSB are at times not concluded while transferring officers. CSB at centers chaired by the cabinet secretaries with the secretaries of a department of personnel, one other secretaries of the governments of India, etc. as its members. Functioning क्या है कि for a post of joint secretaries and equivalents and independent evaluations of the annual confidential reports is made by the 4 secretaries of the government of India, then considered by the civil service board. The civil service boards then makes a recommendation to the appointment committees of the cabinet for the implements of a suitable officers. Arguments favoring CSB क्या है कि providing for the states to follow the center's guidelines, giving a fixed tenure of at least 2 years for the cadre officers cannot be transferred before that. If anyone recommends their transfer, then the board will examine it, expected to bring a greater transparency in the system. उसके बाद नेक्स्ट जो ये आर्टिकल्स है अबाउट द केरला हैज़ नो राइट इन द इंटरनेशनल फिशिंग डील. ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी डीप सी फिशिंग क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, कंटिजियस जोन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, इंटरनेशनल वाटर क्या होता है. तो यहाँ पर देख लो देखो, इंटरनल वाटर जो होता है तुम्हारा ये जो टेरिटोरियल सी क्या होता है कि जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है और आने वाला 12 नॉटिकल माइल हो जाता है ये तुम्हारा कंटिजियस जोन. ये जो इंटरनल वाटर और 12 नॉटिकल टेरिटोरियल सी जो होता है वो तुम्हारा नेशनल एयर स्पेस है. ठीक है, और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल कंटिजियस जोन से जो हो जाता है वो सारा इंटरनेशनल ही हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद ये टेरिटोरियल सी से लेके तुम्हारा 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है. ठीक है, सॉरी कंटिजियस से लेके 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. फिर 200 नॉटिकल माइल्स के बाद तुम्हारा हाई सी हो जाता है जो कि इंटरनेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल वाटर हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द इंडियन हिस्ट्री एंड डिस्टॉर्टेड नरेशंस. इससे रिलेटेड प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इंडियन कल्चर, मॉडर्न टाइम, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ठीक है, न्यूज़ क्या है कि द लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय द यूजीसी फॉर द ईयर 2020-21. critical appraisals of the history curriculum. ठीक है, तो क्या है कि आइडिया ऑफ द नेशनल प्राइड, द एरिया ऑफ भारत
chapter, Bharatvarsha, regions lying south of the Himalaya. Indian knowledge, traditions, art and culture. With Vasudev Kutumbkan, the ancient period and an undisturbed era. Invasions of Kusana Shakas. इसके बारे में कुछ नहीं दिया है. फिर नॉन inclusive histories ignores the history of the people south of the Vindhya, eastern India and northeast India. Very little reference revives the colonial trends of the historiography. Terms like Aryan Age, Hindu society were common in the colonial writings to the condensation portraits and inferior narrature of original societies. फिर उसके बाद curriculums revives there is in their writings creates a division under the current in the culturally diverse India society. Communal divide हो जाएगा. Hindu society, Muslim society give nations that both existed as separate entities. Political importance of the few society underplaced. History of the Odisha Rajputanas and the rest of the Peninsula India has been unfairly described. Conventional teaching methods doesn't involve engagements with students. Historical artifacts like coins, historical books, rocks not to be used actively will not kindle interest amongst the students. Less diversity in the book recommendations. Parochial collection with unidirectional options. Less diversities of opinions and ideologies can induce defective understandings of the history among the students. Narration times 1900 to 1980. Challenges that face the students are diverse. Climate changes, big data, etc. makes the contours of a new world ideologically curtailing students could make ill-equipped individual to combat the future. LOCF pushes the majoritarian views. Next articles are about the less than 6% of the house under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin completed this year. इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है. जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है. अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट in the various sections and issues arising out of this design and the implementation welfare schemes for vulnerable sections of our populations by centers and the states and the performance of these schemes. इंदिरा आवास योजना जो कि रूरल हाउसिंग प्रोग्राम था as an independent program started with the Indira's Awas Yojana in January 1996. Gaps in Indira Awas Yojana, non-assessments of housing, lack of transparency in selection of beneficiaries, low qualities of the house and lack of technical supervisions,
loan not avails by beneficiaries and the weak ETCs. Indira Awas Yojana was restructured into PMG in 2000, Pradhan Mantri Awas Yojana in government in 2016. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin committed to provide housing for all by 2022. Under the Ministry of Rural Development, aim provide a Pakka house with the basic amenities to all houseless householders and those households living in Kacha and dilapidated house by 2022. Identifications of beneficiaries as per the housing deprivations parameters and exclusions criteria prescribed under the social economical caste census 2011 due verifications by Gram Sabha provide assistance for construction of 2.95 crore Pakka by March 2022. Enhance the unit of assistance from rupees 70,000 under the IAY rupees 1.2 lakh in plain areas. Okay. From rupees 75,000 to 1.3 lakhs in the hilly estates, northeast states, difficult areas, and integrated action plans. Tribal and backward districts. Cost of unit assistance is shared between central and the state governments. Assistance of construction of toilet provide 90 to 95 days of unskilled wages under the Manregas. Minimum unit size of a house has been enhanced rupees 20 from 20 square meter under the Indira Awas Yojana to 25 square meter. Facilitates facilitate the willing beneficiary to avail the loan from the financial institution from an amount of up to 70,000. Attempts are converging different programs for pipe drinking waters, electricity concerns, connections, LPG gas connection, etc. प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना is unlikely to achieve its target by 2022. By January 2021, less than 1.27 crore houses has been completed. Time for construction of a house under the schemes has reduced to 114 days from 314 days due to the use of the direct beneficiary transfer. Impact of the COVID-19 pandemic brings the work to the standstill. अब इससे रिलेटेड फिल्म में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. It is the first ever government funded rural housing programs in independent India. हो सकता है. Implemented by the Ministry of Rural Development and schemes aim to provide more than 2 crore Pakka house
for eligible rural household by 2022 हो सकता है। इसका आंसर देख लेते हैं। सिक्स का बी है आंसर पक्का, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला, यानी कि बस 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है कि ये फर्स्ट एवर गवर्नमेंट फंडेड रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स है इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। इससे रिलेटेड प्रीलिम क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज, सोशल एम्पावरमेंट। जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी ने डाइवर्स मतलब डिफरेंस बैकग्राउंड, लाइफ एक्सपीरियंस एंड beliefs to interconnection concept. Diversity represents or makes up to an entire. Inclusions contribute to presence and perspective of a different groups are valued and integrated into an environment. Freedom struggles, different struggles, religious and regional backgrounds came together to oppose the British and free harmful social practice prevented certain sections from discovering and understanding their potential. Reservations effective only if it is carried out with a strong resolve to improve the genius inclusion. Measure adopted by IIMB क्या है कि student with disabilities admitted even before the disabilities, equal opportunity protections of rights and full participation Act 1995, Office of Disability Service studies the individual needs for each student, provide required accommodations. Students related assessments, fairness and examination, evaluations by acknowledging the diversities in the mind. ठीक है, ये सब है। फिर एडमिशंस इन टू द डॉक्टोरल प्रोग्राम्स क्या बोल रहा है कि नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स फॉर अ मेरिट। NS रामास्वामी प्री डॉक्टोरल प्रोग्राम्स इन 2019 internally funded academics and mentoring initiatives selects and trains around 10 candidates from underprivileged categories. फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है रिलेटेड टू द सेव योर लीवर फ्रॉम द वायरल हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हेपेटाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशंस ऑफ द लीवर हो जाता है। ठीक है, अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ द लीवर्स, मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शंस। complications varies with types of infections. Virals hepatitis
types hepatitis A, B, C, D, and E. Each types caused by the different hepatitis virus. फिर फर्स्ट टाइप्स हेपेटाइटिस ए जो होता है कॉज बाय द इन्फेक्शंस विद द हेपेटाइटिस ए वायरस मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय consuming food and waters contaminated by feces from the person infected with the hepatitis A. So second types of hepatitis B virus and hepatitis C virus transmitted through blood and body fluids. More serious threats can lead to the chronic conditions like cirrhosis and liver cancer. फिर उसके बाद बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो अटैक करता है लीवर एंड cause the both acute and chronic disease commonly transmitted from mother to the children during the birth. Also transmitted through contacts with blood or other body fluids can leads to the cirrhosis and liver cancers. Safety and effective vaccines which offers the 98 to 100% protections against the hepatitis B is available. मतलब वैक्सीन अवेलेबल है. हेपेटाइटिस ए बी सी का सिम्टम क्या क्या है? फीवर होगा, मलेसिस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, डायरिया होगा, नोसेल्स होगा, एबनॉर्मल डिस्कम्फोर्ट होगा, डार्क कलर्ड यूरिन होगा, ठीक है, जॉन्डिस होगा, ये सब है. और हेपेटाइटिस बी जो है वो मोस्ट कॉमन है. हेपेटाइटिस डी भी होता है, हेपेटाइटिस ई भी होता है. हेपेटाइटिस ई वाटरबॉर्न डिजीज होता है, ठीक है, मेनली थ्रू द फूड एंड एरिया ऑफ पुअर सैनिटेशन के कारण होता है, ठीक है. ये सब सिम्टम है इसका, फीवर आना, ठीक है. और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा होता है, ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हेपेटाइटिस. मोस्ट ऑफन इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन. बिल्कुल सही है. हेपेटाइटिस बी इज़ मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड थ्रू द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी. बिल्कुल सही है. Till now, no vaccines has given protection against hepatitis B is developed. नई वैक्सीन आ चुका है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द मजल्स मीडिया. तो प्रेस गैजेटेट्स मीडिया दैट मीडिया फ्रीडम हेल्थ चेक इंडिया क्रिटिकली इशूड में डाल दिया गया है, ठीक है. चाइना, सऊदी अरेबिया एंड रसिया, जो कि दोनों सब क्रिटिकली में डाल दिया, इशूड में डाला गया, ठीक है, मीडिया को. ठीक है. क्लासिफिकेशन क्या बोल रहा है कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड: pluralism and independence, safety of a journalist, other press freedom index, assigned colors: green for the good performance, amber for some areas of concerns, red for critical issues. इंडिया परफॉर्मेंस जो कि तुम्हारा एम्बर में था, जो कि 166 कंट्रीज वर रेटेड ग्रीन्स, 113 वर रेटेड एम्बर एंड 23 वर रेड्स. सेफ्टी रेटिंग्स: 2022 जर्नलिस्ट वर किल्ड, 4 वर इम्प्रिजन्ड, रेड कलर्स में है, ठीक है. वर्ल्ड वाइड 32 जर्नलिस्ट वर किल्ड, 274 were imprisoned and 75 went missing. प्रेस फ्रीडम्स इंडेक्स रेटिंग क्या बोल रहा है कि इंडिया रैंक्ड 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है. रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर
ये मतलब कि निकालता है वर्ल्ड फ्रीडम रहेगा तो तुम्हारे लिए बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता, ऐसे याद रख सकते हो। फिर रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर निकालता है क्या, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, इंडिया रिसीव लो स्कोर फ्रीडम्स इन द वर्ल्ड रिपोर्ट से फ्रीडम हाउस रेड कलर में। आउट ऑफ द 3 कैटेगरी इंडिया received red colors in 2 categories. India overall rating is red. फिर इससे क्वेश्चन एक प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये निकालता है फ्रीडम ये रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट आर्टिकल्स है कि ब्रिंग द एजुकेशन इन द स्टेट लिस्ट, अलागिरी बोला। ठीक है, कांग्रेस लीडर है। ठीक है, तो एजुकेशन अभी फ़िलहाल स्टेट ये कंकरेंट लिस्ट में है, उसको स्टेट लिस्ट में लाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंटर्ड लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 246 एग्रीकल्चर एजुकेशन से। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि प्रोविजंस ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द मर्चेंटाइल्स marines and regulations of such education and training provided by the states and other agency. थर्ड बोल रहा है कि प्रोविज़न फॉर एरोनॉटिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ सच एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एंड अदर एजेंसी। फोर्थ बोल रहा है फिशिंग एंड फिशरीज बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर। यह तो यूनियन लिस्ट आएगा 4 पक्का। तो 4 है तो तुम्हारा 1 2 3 आ जाएगा, एग्रीकल्चर एजुकेशन या स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो 1 का जो आंसर है 1 का सी आंसर है। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बाकी प्रोविज़न फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द mercantile marines and regulations of such education and training provided by the state and other agency. Provision for aeronautical education and training are and regulation of such education and training provided by the states and other agencies. Fishing and fisheries beyond the territorial water, ये सारा तुम्हारा यूनियन लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2014 में एक क्वेश्चन था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक निकालता है तुम्हारा तो ठीक है IMF निकालता है। ठीक है, IMF निकालता है, IMF टेबल ऑफ माई आउटलुक। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालता है IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF निकालता है, ये हो जाएगा 2 का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है तुम्हारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। थर्ड का बी हो जाएगा आंसर, थर्ड का बी आंसर है। चलो, फोर्थ है तुम्हारा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हेपेटाइटिस मोस्ट ऑफन इट इज कॉज्ड बाय द वायरल। बिल्कुल सही है, हेपेटाइटिस बी इज कॉमनली
most commonly transmitted from the mother to the children through the contact of the body fluid। बिल्कुल सही है। टिल नाउ नो वैक्सीन, नहीं वैक्सीन में निकाल चुका है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। 4 का देख लेते हैं आंसर क्या है। 4 का आंसर बी है। चलो ठीक है। 5 देखते हैं कि बीसीसीआई के बारे में है। ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिकेट गवर्नेंस इन इंडिया, बिल्कुल सही है। इट इज़ एफिलेटेड टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी, 5 का सी। लास्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इट इज़ द फर्स्ट एवर गवर्नमेंट फंडेड रूरल हाउसिंग प्रोग्राम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, नहीं फर्स्ट इनसे पहले इंदिरा आवास योजना भी आ चुका है। ठीक है। फिर सेकंड है तुम्हारा कि इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, बहुत ग्रामीण है तो रूरल एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। द स्कीम एम टू प्रोवाइड द मोर देन 2 करोड़ पक्का हाउसेस फॉर एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड बाई 2022, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी आंसर हो जाएगा। फिर मेंस का 3 क्वेश्चन है, वो थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कि इन ऑर्डर टू जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन द सिविल सर्वेंट, तो ऑल स्टेट्स इन इंडिया शैल इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स इन TSR सुब्रमण्यम केस। ठीक है। एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एलोबरेट्स। फिर जीएस पेपर 2 और 3 में क्वेश्चन पूछ सकता है कि inclusion is not just about bringing diverse people into what already exists, comment। फिर उसके बाद 2013 में मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि what do you understand by the umpire decision review systems in cricket, discuss its various components, explain how silicones step on the edge of the bat may फूल द सिस्टम्स। ठीक है। अब ये लेक्चर समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।